हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रोकर इज एन एजेंट हु गिव्स अ गारंटी टू द सेलर दैट द बायर विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स। अब इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज ब्रोकर गारंटी नहीं देता है, गारंटी देता है डेल क्रेडर एजेंट। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था डेल क्रेडर एजेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। अब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, बिकॉज लिस्ट प्राइस पर हम कैश डिस्काउंट नहीं देते हैं, लिस्ट प्राइस पर हम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड on the list price, तो इसका आंसर होना चाहिए था ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, थर्ड वन, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द कैटलॉग प्राइस। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कैटलॉग प्राइस क्या होता है? द लिस्ट प्राइस और द मार्क्ड प्राइस। सो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द कैटलॉग प्राइस, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The buyer is legally allowed 6 days of grace period. Now this statement is false. Grace period 6 days का नहीं होता है, it is for 3 days. 3 days grace period दिया जाता है। Question number 5. The date on which the period of the bill expires is called the nominal due date. Yes, the statement is true. तो जिस दिन बिल एक्सपायर होता है वो डेट को हम बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर 6। The difference between banker's discount and the true discount. So banker's discount and true discount, इसका जो डिफरेंस है is called the sum due. अब ये स्टेटमेंट है false. डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, ये एक्चुअली होता है बैंकर्स गेन एंड नॉट द सम ड्यू। क्वेश्चन नंबर 7। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू डिस्काउंट। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे कहा गया है बैंकर्स डिस्काउंट इज लोअर देन द ट्रू डिस्काउंट। अभी गलत क्यों है? बिकॉज बैंकर्स डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे एंड ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रेजेंट वर्थ। वी नो दैट फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वर्थ, सो ऑब्वियसली बैंकर्स डिस्काउंट विल बी ग्रेटर देन द ट्रू डिस्काउंट। और यहाँ कहा गया है इट इज लोअर, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8। The banker's discount is also called as the commercial discount. Yes, banker's discount का दूसरा नाम है commercial discount. So this is true. Question number 9. In general, cash discount is more than the trade discount. अब cash discount तो optional होता है, वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, right? और कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट से कभी भी ज्यादा नहीं होता है। वो तो एक छोटा सा एक डिस्काउंट दिया जाता है बियॉन्ड द ट्रेड डिस्काउंट, सो इट कांट बी मोर देन द ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। यस, दिस इज ट्रू। तो ट्रांजैक्शन में ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट दोनों भी मिल सकते हैं, वरना सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही मिल सकता है। सो ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। सो पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड cash discount. So this statement is true.